सो ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि मैं कोई बॉलीवुड मूवी के लिए इतना अर्ली मॉर्निंग शो के लिए जाऊंगा, बट इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट एंड हैट्स ऑफ टू वानी एंड हैट्स ऑफ टू आयुष्मान. Welcome back to channel. Nothing is getting absolutely fine. So Chandigarh Kare Ashiki is next level drama. It's next level topic, which is such a sensitive topic of a trans woman and her struggles and how entirely the movie kind of picturizes her story from her point of view as well as from Ayushman's point of view as well. तो उस वीडियो को एज स्पॉइलर फ्री रखने के लिए all in all it is an amazing movie. You have to watch it based on a very much open minded perspective and not making any kind of pre judgments about the things which you know or you might not know about. Ayushman का role इसमें as a very he starts from being a kind of a gym leader, like a gym trainer. उसका like gym रहता है. He is very much stronger about it, and then he meets Vani, and Vani is a transgender, a trans woman, and they kind of fell in love. And at that time उसको पता नहीं रहता है कि she is a trans woman, but उसको जब पता चलता है तभी एक basic person जिसको who has no knowledge about what orientation is or what gender sexuality is or how like what exactly a transgender is, and उस तरीके से हर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया. लाइक इवन हिज फैमिली मेंबर्स और हिज फ्रेंड्स और वो जिन जिन से उस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करता है, हाउ दे आर रिएक्टिंग टू इट. इट हैज़ बीन लाइक पिक्चराइज्ड एंड रिटर्न इन अ वेरी कैलकुलेटेड मैनर, आई वुड से. ऑल एंड अगर स्टोरी लाइन को देखा जाए तो स्टोरी बहुत बीच में थोड़ी स्लो हो जाती है, विच इज काइंड ऑफ ओके, बट द सॉन्ग्स आर सुपर सुपर अमेजिंग इन द मूवी एंड इट विल कीप यू एंगेज विद रिस्पेक्ट टू दैट स्लोअर पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट स्टार्टिंग से ही यू आर काइंड ऑफ ग्लूड टू हाउ दे आर परफॉर्मिंग. सिनेमाटोग्राफी वाइज इट इज सुपर सुपर अमेजिंग एंड आयुष्मान हिमसेल्फ इन द मूवी, उसके सारी पहले की भी अगर मूवीज हम देखने जाए कि लाइक अगर शुभमंगल ज्यादा सावधान या फिर बाकी भी जो उसने मूवीज की है, आई वॉज फर्स्टली वेरी मच अनश्योर कि आयुष्मान एक ऐसी मूवी कर रहा है विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रोमांस, बट एट द एंड वी गॉट टू नो दैट इट हैज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू इट. इट हैज अ वेरी सेंसिटिव story line to it, and all in all it is an amazing picturization, and really hats off to Vani for portraying that trans woman's character and how she has played her role, how what she has gone through, and how her character has developed. It is super amazing. So both are really amazing in the overall movie. Comic factor भी थोड़ा बहुत है, ड्रामा भी बहुत ज्यादा है. एक्शन वाइज तो डेफिनेटली इट इज अ रोमांटिक मूवी, बट so all in all, it is an amazing bundle which you will get, which if you see this specific movie. So that is it for a quick reaction review of the Chandigarh Kare Aashiki. It is an amazing movie which will really bring a kind of a point of view in India. For example, we've really had in the last few years, to be very specific, we've had such content which was never being even imagined. It was just made fun of these specific topics in the past movies. If you see, based on all the old movies which were there, these topics were just made fun of. But during the past few years, be it Sacred Games, be it a lot of other movies as well, we are really proud to see where India is going and what such these topics are being highlighted right now, even with as big stars as Ayushman. And I'm really thankful of Vani and Ayushman and the entire creators of this movie for bringing such a sensitive topic to big screen and trying to give this amazing social message. So that is it for the overall spoiler-free review of the movie. It is an amazing movie. Please जाके theaters में से देखिए. Overall उसके songs भी बहुत amazing है and it will definitely bring a smile at your face at the end. So thank you so much for watching until here. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet. I'll be meeting you in the next video.